Hello everyone, welcome to OASHUB. I'm Sip Shankar Hajra with you with the today's ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଆମେ ଦେଖିବା the Indian Express new Indian Express କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 30 ଅଗଷ୍ଟ। Happy Raksha Bandhan to everyone and wish you a very happy Raksha Bandhan and wish you all the prosperity and I would say that is the what good future ahead to the all sisters and the brothers of our country. So this is what I would say. This shows our culture, the bonding between the brother and the sisters. So Sathipai Mukabi Raksha Bandhan once again say happy Raksha Bandhan from our side. So Ethirajiti Amidika Prime Minister of India, that is Narendra Modi, he has not left himself and he has greeted the nation with a special gift that 200 rupees last. The LPG cylinders is going to be cheaper by 200 rupees from today. Now, under the which scheme? That would be Ujala scheme. So this is very important, Ujala scheme. Ujala gas connectivity के अंदर 200 रुपये अब आपको छूट मिलेगा. That means that would be subsidies, 200 rupees subsidy would be given. And this is a big news for the indoor environment, clean environment, and for the longevity, also the empowering the woman of the family and the nation. सो उजाला गैस इट वाज स्टार्टेड वे बैक इन 2016 पे स्टार्ट हुआ था और इसका जो ऑब्जेक्टिव था ना कि एटलीस्ट जो रसोई गैस है वो सस्ते से सस्ते में मिल जाए ताकि जो हमारा बहन है माँ है जो घर में रसोई करते हैं ना उनको थोड़ा दिक्कत कम हो तो इंडर पॉल्यूशन कम हो जाए हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा आई जो कैटरैक्ट होता है वो नहीं होगा लंजिविटी बढ़ जाएगा तो इसलिए ये सोच समझ के किया गया था नाउ आज ऑफ नाउ like 75 lakhs new Ujala gas connection has been done. So new connection अगर हम देखेंगे इतना हो गया तो बहुत ही this means this is a big gift from the Prime Minister for the nation and for the I would say what that is the what mother and the sister of this nation. So now you can have the success stories under the Prime Minister leadership of the Prime Ministers. The dignity and the respect of the woman has become the pride of the nation. About 4 crores household is given that is what boost to the self-esteem of the sisters and the daughters of the country. That means household को दिया गया है जो अगर हम देखेंगे 4 crores has been have been given houses को दिया गया है उजाला स्कीम 9.6 crore उजाला गैस कनेक्शन हुआ है इसमें more than 11 crores toilet manufacturing हो गया उसको मध्य दिया गया है more than 11 crore toilets has been built for this for the nation as well. The tap water connectivity has been also given 30 crores homes has been connected with the clean water as well. So these are the some folder points you can write in your paper. That means in a governance paper, paper 2, in paper 3, you can also write in paper 3 as well. So both the papers, especially I would say the governance part, that is the paper 2 of UPSC and OPSC as well, paper 2. So see houses. So just a minute, correct me. That 4 crores houses have been given. That means the Pradhan Mantri Awas Yojana. 9.6 crore Ujala gas connectivity has been given or is been done away, and more than 11 crore toilets is been built. So these are the some of the great stories. Our 30 crores mudra loan is been given. This is also one of the most important things. 10 crores women are associated with the self-help group, that is the SSG. Over 3.6 crore Sukanya Samriddhi accounts is been opened, and that is one of the beauty of total worth 2 lakh crore. So that means you can imagine how much money is been I would say but infusing to the banking system of India. The paid maternity leave increased from the 12 month to 26 months, and I would say this is very good points for the answer writing. Those who are wishing and those who are writing the UPSC mains this year and also going to appear for the OPSC and the, any sort of examination, particularly the civil service examination, these points are I would say what pretty beautiful for you. You can blindly I would say what write these points in the governance part and use the photo point for your answer as well. That would be face pretty good marks as well, so you can use this one. So maternity relief has been I would say what leave that is increased from the 12 to 26 weeks. The dignity of the Muslim woman enhanced by putting to end and the practice of triple talaq. So this the divorce process in the Muslim I would say what laws, that is the traditional laws, has been done away. So this has also been aimed. So these are the some of the beautiful stories that what I would say the Prime Minister has done for the nation in the last 10 years.
So once again, a happy Raksha Bandhan to all of you from our side. So now we will begin the good news. That is the LPG price has been cut by 200, and that signs the clear hint or the early hint of the poll according to the author or the paper says. Now Kharge जो हमें देखा था, Kharge is going to be the front face of the Mahagathbandhan. So we are not going to enter into that news because this is not required for us. So this one would be your point. So this would be the point. Now we will discuss two important points. One would be from the what road safety. The Supreme Court panel has asked the state for the measures on the road safety. This is very important. What happens to the is that the Supreme Court committee on the road safety. This is very important. That is the what the secretary of the Supreme Court of the Road Safety Committee, Sanjay Mittal, who is been the state visit for the Odisha, and that person has visited from, that means has taken the audit of the road safety audit on the National Highway 16 and the National Highway 316 as well, which connects Bhubaneswar to Puri, and the 16 connects from the Baharampur to Baleshwar. This one passing through the what the major cities like Baharampur, Chilka, then Khordha, Bhubaneswar, Cuttack, Jajpur, Bhadrag, Baleshwar, that NH16, which is one of the most important highway in the state. So that secretary, I would say the person, the Honorable Secretary of the Supreme Court on the road safety measures, Sanjay Mittal, has taken the stock of these two, that is the highway, to what exactly the lacunas of these highways, where exactly the road safeties are compromised, how can we improve the road safety in the states. And Odisha is one of the fast, I would say what the top state in terms of the total fatal death on the road. So that is why the black spot को identify करिबा, to identify the black spot, encroachment को remove करिबा, एंड तो जो एनक्रोचमेंट है ना उसको रिमूव करना है, ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दुर्घटना होता है, and who are the person associated and who are the person who is really responsible for the such I would say incidents. And Odisha one of the top state, and probably it would be faster the second in terms of the fatal death which exactly take place in every day on the highways. सो खलीकोट से लेके जो भुवनेश्वर तक रोड है ना, ये खासकर जो बहरमपुर खलीकोट साइड है, यहाँ पे एनएचआई को बोला गया है कि भाई यहाँ पे कन्वेक्स मिरर लगवाइए, जहाँ जहाँ पे एनक्रोचमेंट हुआ है उसको ख़त्म कर दीजिए आप। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଦେଖିବେ ପଟହୋଲ୍ସ ଅଛି ରୋଡ଼ରେ, ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଚକାବାଲା ଗାଡ଼ି ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ସ କଥା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍କୁଟି, ଖାସ କରି ସ୍କୁଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଟିଜ୍, they will face very difficulty while moving through these, I would say, but black spot, and that is the what potholes in the road. So they are very dangerous. So ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ କରାଇଛି, so they have asked the state government and the highways authorities what that is the NHI, especially who is responsible, that is the NHI is responsible for the removing and the taking of this care. So this you can write how the Supreme Court, that is the active governance, you can write in active governance, and the proactive governance and the proactiveness of the Supreme Court. जुडिशियल एक्टिविटीज जहाँ आम कहे जुडिशियल प्रोआक्टिवनेस तुम लिखिपर जुडिशियल ओवररिच मुझे कहबी सिंपल आई वुड से प्रोआक्टिवनेस ऑफ द जुडिशियरी एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो मॉनिटरिंग द स्टेट गवर्नमेंट को कह टू इम्प्रूव द व्हाट आई वुड से आम कह एजुकेशन कथा नहीं जाओ रोड सेफ्टी उपर एजुकेशन स्कूल मानक दि जाऊ एंड एनएचआई को हाईवे दैट इज द अथॉरिटी को कह जहाँ भी एनक्रोचमेंट वगैरह अच्छे हटेक ये करेंगे. ना कम्स टू एएसआई the what that is the Archaeological Survey of India panel set that is of a panel on the Jagamohan to examine the Konark interior by ये बहुत important जदि हमें कहबा Jagamohan is the what that is the जहाँ को महामंडप in the Nagara style जहाँ को कहा महामंडप for the renovation of the Konark temple, which is only UNESCO heritage site in the state, the only UNESCO heritage site in the state, and the World Heritage Site, one of the most artisticated and I would say beautiful temple in the history of architecture, art and architecture in the world, not in India. The Sun Temple, which is situated 30 km north from the Puri on the shore of Bay of Bengal, 3 km from where the exactly on the bank of the Dead River, that is what Chandrabhaga. So this Konark
जहाँ आपण मैंने देखुं दिस वन इज जगमोहन अत महामंडप जो थे कौन हो जो महामंडप दिस इज सैंड फिलिंग करके रखा जाए आपको सैंड फिलिंग करके रखाई ये पूरा हॉलो नहीं आ भितर कौन अच्छी सैंड अच्छी जहाँ आम कोणार्क टेम्पल देखुचे जहाँ देखिए बहुत सारा रड लगाई सपोर्ट देके रखाई ताकि ये जमी खत्म न हो जाए तेणु करके आपको कौन खाऊँ रिनोवेशन एक्टिविटी स्टार्ट होती माने जो टीम गोटे आसी आमर आईआईटी जमी मद्रास रू टीम आसिक रिसर्च करुँच कि जो सैंड फिलिंग अच्छी कौन सैंड को ड्रिल आउट करके आम ड्रिलिंग करके तार किसी रिनोवेशन एक्टिविटीज करिपरिबा कि नहीं जदि किंबा आम ड्रिलिंग करिया पूर्व टेस्ट करिबा वेदर द स्टोन व्हिच इज बीन I would say what incorporated and out of which the Konark is given the shape से stone मानकर केते strength अच्छी whether they can sustain the drilling activities which is required for the renovation of the temples and drilling of the sands having the what option so all these angles would be हमको देखा जब मतलब they will analyze everything तो इंटीरियर कंडीशन को देखा जब स्टोन रो एज को देखा जब तार लंजिविटी को देखा जब तार स्ट्रेंथ केते अच्छी देखा जब ये सब को देखिकी डिसीजन निया जब कौन ड्रिलिंग हो पार नहीं रेनोवेशनल एक्टिविटीज हो पार नहीं ता भीतर सैंड को आम ड्रिलिंग करके किसी काम कर कि नहीं सो दैट इज द न्यूज ना कम्स टू जो आम देखा एलिफेंट डेथ आजिकल मैन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बहुत चली आप देखिए सेंसेशन हो गलान ओडिशा रे प्रत्येक दिन गोटे ना गोटे लोक मरुचु ना एलिफेंट मर ना क्रोकोडाइल खाऊँ तो आम जब देखा दैट मीन्स सो हाईकोर्ट ओडिशार कहते सॉरी तो हाईकोर्ट कहते गोटे हाईकोर्ट टू होल्ड द सेशन ऑन द एलिफेंट डेथ कहले देखा सिग्निफिकेंटली कहले तो आम देखा कहीं बहुत सारा लोक मरुँच नहीं बहुत सारा केसेस आसी एंड ओडिशा हूँ एलिफेंट द्वारा मरवा ओडिशा एलिफेंट मरवा एलिफेंट द्वारा लोक मरवा मैन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट ओडिशा इज नंबर 1 so that could be the crocodile attack हो पारे सेटा एलिफेंट अटैक हो पारे सेटा वाइल्ड वोर अटैक हो पारे दैट कुड बी स्नेक अटैक हो पारे सो स्नेक रे नंबर 1 स्नेक बाइट रे इंडियन ओडिशा नंबर 1 एलिफेंट डेथ रे ओडिशा नंबर 1 क्रोकोडाइल रे ओडिशा रे जदि आम देखा मैन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट इज ए टॉक ऑफ द टाउन इन द स्टेट ये बहुत आम देखा तेणु ये गोटे इश्यूज रही आम देखा से तो ये गोटे आमको बहुत इंपोर्टेंट केसेस हमको देखा मिल ना इलेक्शन जदि आम देखा ये आपंपाई इंपोर्टेंट न्यूज बाकी आम देखा रेन जब देखा ओडिशा रे वर्षा वर्ष बहुत कम होती वर्षा तेणुक एक्सपेक्ट कराऊँ कि 31 अगस्त देयर वुड बी इंक्रीज इन द रेनफॉल इंक्रीज हो पारे तो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट न्यूज आपंपाई अदरवाइज ड्रट हो बहुत एरिया ड्रट आसीज फूड प्रोटेक्शन कमिज इनफ्लेशन बढ़ीज तेणुक यहाँ रखा इलेक्शन कमिशन ओडिशा विजिट आसुँच इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कौन पोल प्रिपेयर्डनेस को देखापी वेदर आर्ली पोल इज पॉसिबल इन द स्टेट और नॉट टू हाव द प्रेडिक्टिविटी को देखापी आसुँच देन आम देखा देन इंपोर्टेंट न्यूज आउ कौन अच्छी आम देखिए आगे को जाकि तो आर्टिकल्स को डायरेक्ट नाउ वी विल कम्स टू द आर्टिकल ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल अच्छी आज आप गोटे बहुत बढ़िया आर्टिकल अच्छी तो ये गवर्नेंस रिलेटेड आर्टिकल 370 को आप जानते सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर ताकू नहीं कि बहुत सारा लोक ना पिटिशन करोटी ना तुम सुप्रीम कोर्ट रे ना ऑथर फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल टू द लोकसभा ये कहते कौन कहते देखा दैट इज पीटीटी आचार्य सो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल टू द लोकसभा ना व्हाट इज द आइडिया ना आर टॉपिक आम एसेंस देखा कि एसेंस कौन कौन कहते चाहती एसेंस हूँ आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 फेडरल सिस्टम एंड यूटीज फॉर्मेशन तो जदि मु कहबी इफ आई से व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर news or I would say article the articles talk about कि how the status of JNK from the state is now converted into UT है ना now the state of the state that is the statehood is been transferred to the UT whether this is having the power whether the central government is having the power to change this the status from the state to the UT this is the point of the debate on this whole discussion रे में कौन देखा जो आर्टिकल रे ऑथर कहते आचार्य के देखंतु आर्टिकल 1 2 3 आर्टिकल 2 रो पावर कौन करे तो दैट मीन्स आर्टिकल 370 को जितने आमर एब्रिगेट करूचे और गोटे स्टेट को आम यूटीज रे कन्वर्ट करूचे ये अनकन्स्टिट्यूशनल कन्स्टिट्यूशनल डज नॉट हैव और डज नॉट गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट को पावर दे ना कि गोटे से स्टेट को यूटीज रे कन्वर्ट करि परिबे हाँ
आपण गोटे स्टेट रो किछि पार्ट को यूटी रे कन्वर्ट करि परिबे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से गोटे स्टेट रो एरिया को बढ़ई हबो घटई हबो बाउंड्री को चेंज करि हबो ना को चेंज करि हबो। सो दैट मीन्स इटा पार्टली ही परिबो। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 जति देखिबा आर्टिकल 2 sorry, it would be Article 3. So, pardon me. Article 3 defines the Parliament effect change of the physical status of the form. So, that means Article 3 कौन हुए, pardon me. Article 3 हुए कि तार गोटे एरिया को घटेबा बढ़ेबा कमेबा ये सब तुमरो की करि परिबो Article 3 करि परिबो ना चेंज करबा इसो करि परिबो। बट किंतु गोटे स्टेट होल स्टेट को हमें Article 3 को यूज करके ताको यूटी रे कन्वर्ट करदबा ये ठीक नुह, ये पावर दिया जाई नाही। तेणु करिकी जदि आम आर्टिकल 3 देखा बाउंड्रीज आम नेम सब करवा किंतु आर्टिकल 2 कौन हुए आर्टिकल 2 जदि आम फॉर एग्जांपल आम कह एक्सप्लेनेशन 2 रे से कहते किंतु ये हो पारिबो नाही जदि आम देखा तो सी कहवा कथा तांकर किए आर्टिकल 3 पावर दे नाही। तो दैट मीन्स आम कह आर्टिकल 3 उपर ज़्यादातर ऑथर कौन कर ध्यान देती कहवा कथा जे आर्टिकल 3 अनुसार आप कौन से गोटे स्टेट रो एरिया को घटे पारे बढ़ई पारे ना चेंज करेंगे किंतु आप टोटाल स्टेट को करेंगे नहीं पार्टली करेंगे। सो ये लिखाई देख तो दैट मीन्स आम देखा ये द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इनटू द 2 यूटीज पावर ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू कन्वर्ट द स्टेट इनटू द यूटीज। दिस इज an what apprehension to the sum that is quarter of the UTs। तो से कहवा कथा ये गोटे ठीक नुह, दिस इज नॉट ए गुड एग्जांपल, दिस इज नॉट ए गुड प्रेसिडेंट कि आगु भी एमिति कौन से गोटे स्टेट यूटीज हो पारे। तेणुक कौटि ना कौटि पार्लियामेंट फेडरल सिस्टम को खत्म कर दे पारती। तेणु सब यूटीज आसीज इंडियाटा गोटे यूनिटारी हो फेडरल सिस्टम खत्म हो। तो तांकर कंसर्न होची कि जो फेडरल सिस्टम अच्छी से खत्म हो यूनिटारी सिस्टम आसीज इंडिया को कहुच्छी ये फेडरल सिस्टम। तो सहीटा कौन सर दैट इज द व्हाट रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेठी कौन हम ओनली यूटीज हो तो इंडिया विल बी बीइंग व्हाट यूनियन ऑफ स्टेट जो खाली हो यूनियन ऑफ यूटीज हो तो यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज हो रादर देन द यूनियन ऑफ स्टेट। तो दैट मीन्स ऑथर कहवा कथा कि जदि एमती सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे आम पार्लियामेंट करेंगे ताले आमर जो फेडरल सिस्टम अच्छी ये फेडरल सिस्टम खत्म हो यूनिटारी सिस्टम को आसीज जो दैट मीन्स आमर जो यूनियन ऑफ यूटी स्टेट्स अच्छी सेटा यूनियन ऑफ यूटीज हो एंड दिस इज नॉट ए गुड आइडिया, दिस इज नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस ऑथर कहवा कथा बुझीपार कि नहीं। तेणुकर कि आर्टिकल 3 को से डेप्थ रे डिस्कस करिसेंती से कहया कथा कौन सी स्टेट को आपण तार अधा एरिया बा किछि पार्ट को करि परिबे टोटल स्टेट को आपण करि परिबे नाही। तेणु सुप्रीम कोर्ट मध्य आकु जज करिबा दरकार कि वेदर द पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर to convert whole the state into the UTs or not। So secondly से कहता आर्टिकल 1 says India shall be the union of the state जोटा मु आपन को डिस्कस करली। तो ये पूरा होल आर्टिकल रो समरी मु कहितली कि आर्टिकल 1 2 और 3 को से डिस्कस करछंती। समरी होची जेवन के को जो आर्टिकल 370 को हटा जाईची कि whether this power is having the parliament is having power to remove the article 370। First question, if parliament is having power to change the status of a state to UT, this is the main concept। If parliament is having that power, that would be what negate the federal system and the basic structure would be violate according to Kesalananda Bharati case। तेणु करके ये रहिबो एसेंस रहिबो। देन आम आसबा रेनफॉल डेफिसिट रही। तो इंडिया आज ऑफ नाउ जब हम देखा लगभग बहुत जगह रेनफॉल डेफिसिट होती। मैनी ऑफ द स्टेट्स इन द नेशन हैज रिकॉर्डेड at least 40% of the deficit of the rainfall। That is a bad sign for the inflation, because if the rainfall will have deficit throughout the country and the maximum state like the Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh, these states, Karnataka, Chhattisgarh, Jharkhand, these are the states those who have experienced less than 40% of the 50% of the rainfall deficit, so they are going to suffer a very huge। So that means the overall food production will affected, the drought like the Maharashtra opposition parties in the Maharashtra have sought to declare that Marathwada is a drought affected area। So like this sort of news are coming। Even Odisha has recorded more than 40% of the rainfall। That means if that sort will go, rainfall agar kam hoga, if there would be less rainfall, what will happen is the inflation will go। The inflation would be go of, I would say, what CPI, the consumer price index will enhance, the headline price will enhance, fuel and food ka price बढ़ जाएगा, and this is the clear sign of what that is the El Nino। So what is happening is that the early sign of the withdrawal of the monsoon।
So monsoon as of now, whatever the monsoon has done across the India, the overall deficit rainfall has occurred, has been recorded. So that is also, there is a sign that army withdrawal of the monsoon, which is also the signs of El Nino year. So since the 1913, so this year 2023 is going to be one of the most drought affected and the poorest monsoon years since 1913. 1913 ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଏତେ କମ୍ ରେନଫଲ୍ କେବେ ହେଇନି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯଦି ଖାସ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା लगभग ଆମେ କହିବା 110 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି जो थे आमको देखा कि रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम रेकर्ड होती एंड इनफ्लेशन बढ़िया चांसेस अच्छी। सो इनफ्लेशन बढ़िले कौन हो ना पोवर्टी बढ़ी अनएम्प्लॉयमेंट कमिज एक्सपोर्ट कमिज फूड प्रोडक्शन कमिज। सो दैट वुड बी ए दिस इज नॉट ए गुड साइन आम कह। लास्ट आर्टिकल्स मुझे देखीदेवी आज कौन अच्छे लास्ट आर्टिकल्स आप देखिपारे फेक न्यूज को काउंटर करने कर्नाटक गवर्नमेंट गोटे कौन कर प्लानिंग करके आसुँच गोटे सेल करेंगे आईटी सेल करेंगे किंतु ऑथर कहवा कथा जदि द एडिटर ऑफ द गल्फ ऑफ इंडिया एप्रिहेंशन दैट द गवर्नमेंट विल मिसयूज दिस कि फेक न्यूज ना रे ना गवर्नमेंट प्रेस रो फ्रीडम ऑफ स्पीच को म्यूट करने चेष्टा करेंगे। तेणु करिकी आगको इलेक्शन अच्छी माइट भी कर्नाटक गवर्नमेंट चाहूँगी काउंटर करने क्या बीजेपी को काउंटर करने थ्रू द सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव आम कहीपर। तो कौटी ना कौटी बस आपको हमें इन द नेम ऑफ फेक न्यूज यू आर गोइंग टू व्हाट स्टॉप द वॉइस द फ्रीडम ऑफ वॉइस द फ्रीडम आर्टिकल 19 इज गोइंग टू बी वायलेट व्हाट आर्टिकल 19 इज गोइंग टू बी वायलेट। सो दिस वुड बी द एसेंस आज आम न्यूज आम इंपोर्टेंट न्यूज देखीदेले जहाँ भी थिला। तो ये आम आग को जारी रखी जमी कही आई प्रॉमिस्ड यू कि आई विल कंटिन्यू विथ दिस पेपर्स ओके। हाँ इट माइट भी कोई दिन 10 मिनट लेट हो पारे कोई दिन घंटा लेट हो पारे आपको बट एवरी डे आई विल पोस्ट इन दिस न्यूज किंतु हाँ पूर्व इट्स अ जनरल रिक्वेस्ट एंड ए आई वुड से ए हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज काइंडली सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट so that would be a great for me. Thank you everyone once again. Happy Raksha Bandhan to you all and wish you very prosperity and I would say wish you all the best to everyone. Thank you everyone.